Guys, is my screen visible to you all? All right. So today's topic is all about NLP, right? So we'll be discussing. If anyone knows what NLP is all about, please share it. Please share it what you know about, and we'll discuss it over here. You can drop a message in the chat box. Even I'll see that even. Anyone can unmute themselves even and ask in the chat. They can directly even say what NLP means or what you can do by it. Guys, please participate. All right. So basically, what NLP means is like we are till yesterday, what we were doing is like we were practicing all the our deep learning models on image. So अब हम क्या कर रहे हैं? We are going to do move on to the text models over here now. Like we will be training our deep learning models on the basis of the text. इसमें होता क्या है? NLP is basically all about extracting text, cleaning them out, and doing some various tasks over it. Like tasks include like doing a sentimental analysis of the task, misspelling errors होते हैं उनको ठीक करना, translations ठीक करना like from one language to another, like ऐसे ऐसे task होते हैं. This is what we do using an NLP. This is what whole of NLP means. ठीक है, NLP is just a like way of saying it, like natural language processing we mean by it. All right, so by going with the bookish definition, it is NLP is a field at the intersection of computer sciences, artificial intelligence, and linguistics. The goal is for computers to process and understand the natural language to perform tasks like language translation and question answering. So what exactly it is all about is कि भाई जैसे like we interact with, like we humans interact with each other in the same way we need to interact with the machine itself. Like जैसे कि for example I can say over here, if we are talking with each other we ignore the stop words, like this doesn't hold any importance in the in what we speak. Like it doesn't change the meaning of sentence. If suppose like we say this is a boy, so this just refers to the person who that we are referring to as boy, but indirectly we can say that that person is a boy is what we take in our mind, and we can know come to know that boy is that boy, that person is a boy. So we just ignore this and that. This is what we have to do with the machine itself. We have to train it in such a way that it even understands what we are making it understand, and the meaning of that sentence remains the same. So we can see over here, I've given some image over here. So AI is a whole of a set and which consists of subsets as ML and DL and NLP both. Like this is just a basic thing over here, but yeah, this subset and set is like whole lot of includes the image processing part even and other parts even. All right. So why we need to study? Like I have told you, complex question answering होती है, sentiment analysis होती है, स्पेल चेकिंग होती है, सिनोनिम्स ढूंढने होते हैं. कभी किसी का क्या होता है, कभी बार गूगल प्ले स्टोर पे आप कमेंट्स डालते हो, तो उस कमेंट्स को हम लोग रीड करते हैं एंड देन वी डिसाइड कि भाई वो जो कमेंट्स आपने डाले गए हैं दे पॉजिटिव वंस और गुड वंस. इसको हम कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस. दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू योर कहते हैं प्ले स्टोर बट टू योर अमेजन फाइट फूड पे भी करते हैं लोग. या यू कैन से like Tanav even he is doing a research in the topic of whether diabetes को like कहते हैं hostel के उसके पास comments हैं like to tell whether a person is diabetic or not. So this is all about कि भाई ऐसा होता है कि अगर diabetic है तो वो negative काउंट कर लेते हैं and वो कहते हैं negative होता है sentiment हो जाता है ऐसे, and if it is not तो वो not words होएगा वो काउंट करेगा as positive. ठीक है, तो बेसिक ऐसे ही करते हैं हम लोग करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं जैसे आई गिव यू वन मोर एग्जांपल. लाइक मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ तो मैंने क्या करना है अपनी रिसर्च के अंदर व्हाट वी आर इंग्लिश लाइक वी आर एक्सट्रैक्टिंग द ट्रांसक्रिप्ट्स इन फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू अदर लैंग्वेजेस ऑफ अदर इंडियन लैंग्वेजेस लाइक हिंदी में कन्वर्ट करना या Bengali में for that matter or Marathi like that. So this is what we are going to use NLP for all of it. All right. So NLP includes each and every like basic उसका cleaning कैसे करते हैं data cleaning हम लोग. It is on the basis of removing stop words. Like when we interact with human beings, so we even see like वही हम stop words होते हैं हम remove कर लेते हैं. ठीक है, like also this that these are the kinds of soft words that we use over here. And उसके बाद जैसे कि हम एक बात देखेंगे हम lower case most of the times while communicating with each other we don't take care of this thing whether what he is saying is in uppercase or lower case, it doesn't matter to us. Similarly over here even it doesn't matter. Okay, so lemmatization का मतलब होता है it helps you reduce to a single
This helps to reduce the words to a single form. Lemmatization means this, and stemming means this helps to reduce to the word to the root form. I give an example like stemming का मतलब exactly I'm giving I show you to I tell you with an example like आपको suppose you're giving using a word programming. इसका जो root word होएगा वो क्या होएगा? It will be program, right? जैसे रनिंग है, रनिंग का रूट वर्ड इज रन. अब जो मर्जी कह लो, लाइक रनिंग हो गया, रनर कह लो, या ही इज रनिंग, जैसे मतलब भी ऐसे वर्ड्स कह सकते हो, प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम्ड, प्रोग्रामर, ये सारे इन सबका रूट वर्ड प्रोग्रामर्स के रिलेटेड होगा प्रोग्राम का. अब रनिंग के केसेस में रन का होएगा. दिस इज व्हाट इज स्टेमिंग, ऑलराइट. अब स्टेमिंग भी अलग अलग तरीके की स्टेमिंग्स होती हैं, लेमटाइजेशन भी अलग अलग होती है. जैसे लेमटाइजेशन का बहुत कॉमनली यूज होता है, लेमन फ्लेक्स यूज करते हैं हम लोग, like a library होती है which we use in for lemmatization. All right, so this is what data cleaning के हम करते हैं. This is one starting, and then we go in for data cleaning of this, like removing regular expressions. इसमें क्या करते हैं हम, we identify and get rid of the different patterns which are not recorded in text. मतलब जैसे होता है ना कि जो अलग अलग patterns होते हैं जो हमारे text से यूजफुल नहीं होते हैं, like अगर suppose कोई, अब जैसे देखो कोई भी प्लेस पर रिव्यूज होते हैं, आप देखोगे कि भाई कोई ना कोई बंदा जो होता है वो किसी ना किसी पैटर्न में वो टेक्स्ट रिव्यूज देता है. जैसे कि इफ इवन इफ इट्स के जैसे आप हो, आप कभी रिव्यूज डालने लगते हो, उससे पहले आप दो रिव्यूज ऊपर देखोगे और दो रिव्यूज नीचे देखोगे कि इस बंदे ने कैसे डाला है, and then we add a review. Sometimes it's in the form of कहते हैं just a text and an emoji at the end. तो ऐसे हम लोगों को वो जो रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं उन पर बहुत देखनी पड़ती है कि जो डिफरेंट पैटर्न है वो रिमूव कर देते हैं. Then parts of speech है, pause tagging इसको कहते हैं. This helps to identify the part of speech. जैसे आप कहते हैं कभी भी कोई सेंटेंस होता है उसमें कोई क्या हमारा प्रोनाउन है, क्या नाउन है, क्या डिटरमाइनर का है, वो ऐसे मतलब होते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच विच हैव स्टडीड इन इंग्लिश, हम उनको ऑन द बेसिस ऑफ द नीड उसके हिसाब से हम लोग उसको रिमूव कर देते हैं. दिस इज व्हाट पॉज इज. ओके सो गाइस, आई एम गोना गिव यू 2 minutes. टीएसएस की रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करेगी इन गिटहब, जो मैंने मेरी लाइब्रेरी वो है रिपोजिटरी, उसके अंदर आई आस्क यू गाइस टू ओपन अप द IPNB फाइल, जुपिटर नोटबुक जो आपकी लेमनाइजेशन की वो खोल लो, पॉज की खोल लो, and then going for stemming. Ma'am, please mute your mic over here. All right, so first of all, लेमनाइजेशन की अपनी नोटबुक जो है वो जुपिटर नोटबुक है उसको खोल दो, एंड पॉज की है वो भी खोल लो, एंड स्टेमिंग की है, स्टॉप वर्ड्स की, ये दोनों भी खोल लो. All right, so this is what, like आप ये नोटबुक्स खोल लो and copy them to drive and connect to your कहते हैं वो कर लो. These are just basic notebooks, like जो basic notebooks होती हैं, मैंने इस बार ये बना दी ताकि it's easier for you guys to read them and access them. And guys, if you have any doubts in between between a session, you can drop a message to me or Tanav. We'll see to your doubts on the chat box over here. Or if even if you want, you can unmute yourself, but please tell us beforehand that you're asking the doubt. All right, so like ये lemmatization notebook ये है. Then I open up the pause notebook side by side. Alright, तो ये लेमटाइजेशन नोटबुक है. अब आपको मैंने बताया था लेमटाइजेशन करती क्या है, राइट? अब लेमटाइजेशन क्या होता है, इसके इज द फॉर्म ऑफ कहते हैं उसके जो वर्ड्स होते हैं उनको रिड्यूस करना है, उनको कहते हैं टू द सिंगल फॉर्म, उसको रिड्यूस करना कहते हैं लेमटाइजेशन. ऑलराइट, ठीक है. तो हम लिमिटाइजेशन के जो वर्ड जो सिंगल आइटम पर आते हैं उनको हम लेमा कहते हैं. तो अब आगे उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा किसी भी टेक्स्ट के अंदर कि कौन सा वर्ड लेमा होता है या कैसे बन जाता है, राइट? जैसे व्हाट आई डिड ओवर हियर इज कि मैंने इंपोर्ट स्पेसी करा है. लाइक स्पेसी इज अनदर एनएलपी लाइब्रेरी दैट वी यूज. ठीक है, उसके बाद मैंने इसके एनएलपी के अंदर स्पेसी लोड किया है, इंग्लिश वे के अंदर लोड किया, लाइक इंग्लिश एनकोड, बेसिकली अलग अलग लोडिंग फाइल्स होती हैं, आप जिस मर्जी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन लैंग्वेज दैट वी यूज. मैंने यहाँ पे इंग्लिश के हिसाब से किया. तो अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया टेक्स्ट, लाइक इट इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल, जिसमें मैंने अपनी टेक्स्ट डाल दिया दैट द बॉय वाज गोइंग फॉर अ ट्रिप वेयर वी कुड से दैट ही हाइक्ड, डांस, सन, स्वैम एंड सर्व्ड एंड कुक्ड, राइट? तो ये था एक लाइन है, ठीक है. उसके बाद मैंने क्या किया, आउटपुट इक्वल टू एनएलपी टेक्स्ट, मतलब कि एनएलपी जो ऊपर मैं डिक्लेयर किया था वेरिएबल उसके अंदर इक्वल कर दिया. एंड देन फॉर टोकन इन आउटपुट मैंने इसको एज फॉर लूप रन कर दिया टू आइडेंटिफाई व्हाट द लेमा इज एंड व्हाट द टोकन टेक्स्ट इज ओवर हियर. अब टोकन क्या होता है? टोकन इज बेसिकली आप किसी भी सेंटेंस है ना, उसको सेंटेंस को आप इनटू पार्ट्स, एक सेंटेंस सपोज द बॉय वाज गोइंग फॉर अ ट्रिप, ठीक है, तो इसको हम टोकनाइज कर देंगे, लेकिन स्मॉल पार्ट्स कर देंगे, लाइक द अलग कर दिया,
बॉय अलग कर दिया, वॉज जो था उसको अलग कर दिया, गोइंग फॉर अलग कर दिया। अब जो था एक काइंड ऑफ एक्ट्स एज अ टोकन, बॉय इवन एक्ट्स एज अ सिंगल इंडिविजुअल टोकन। सिमिलरली ऐसे ये चलता रहता है, these tokens get formed and it's easy for to us to access those tokens, all right? This is even known as tokenization। ये आपको मैं आगे एक डिटेल बता दूंगा कि क्या होती क्या है इन डिटेल, जो हमारी अलग अलग तरीके होती हैं वो, ऑलराइट? अब जैसे जो टेक्स्ट था, कभी बैक टू कहते हैं कंटिन्यू ओवर हियर, जो टेक्स्ट यहाँ पर है द, उसका लेमा द ही रहा, ठीक है? वॉज, अभी देखो बॉय है, उसका सिंगल फॉर्म क्या होएगा? बॉय। अब वॉज का हमारा बी आ गया, ठीक है? तो दिस इज हाउ, दिस इज व्हाट वी डू इन लेमेटाइजेशन, ऑलराइट? तो इसको हम एज अ सिंगल आइटम की तरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं एंड मूव ऑन कर रहे हैं। नीचे हम लोगों ने, आपको मैं वैसे बताया था कि एक बहुत कॉमन लाइब्रेरी है लेमन इफेक्ट, फ्लेक्ट हो गया, उसके ऊपर हम लोगों ने इंस्टॉल किया एंड ऑन दैट बेसिस हम लोगों ने सेम लेमन इफेक्ट के थ्रू किया एंड उसने भी तकरीबन तकरीबन सेम आंसर्स दिए हैं। दिस इज व्हाट लेमनाइजेशन इज। गाइस, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू आस्क। I'll give you 2 minutes, go through the whole of this notebook that I've provided you, then we move on to the next notebook present. If you have any doubts, drop me a message. I'll answer your those doubts in a moment regarding this lematization topic. Uh, Sir, what was the benefit of doing this lemmatization? It just, converted it into different words, broke it into different words, and made it smaller case, right? So, what was the benefit? बेसिकली इसका हम लोगों ने क्या, इसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे देखो, हम लोगों ने सिंपलीफाइड फॉर्म में लेकर आ गए हम लोग, ठीक है? सिंपलीफाइड फॉर्म में लगे तो पहले हम उसको क्लासीफाई जो कर पाएंगे वो इजीली क्लासीफाई कर पाएंगे एंड देन जो सेम मीनिंग के वर्ड्स होंगे, ठीक है, अब उन सेम मीनिंग के वर्ड्स को हम लोग बेसिकली क्लास इकट्ठे कंबाइन करके क्या कहते हैं, हम लोग उसको एक वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हम लोग उसको इजीली एक्सेस कर सकें या जो रिमूव करना है तो रिमूव कर सकें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। होप आई एम क्लियर। Yes, thanks. All right, no issues. Anyone, any doubts, please? All right, so moving on to the next कहते हैं जो children notebook, वो ये है कि भाई वी गोना मूव टू पॉज। पॉज आपको बता देते हैं कि क्या होता है। इट इज कहते हैं पोजीशन पार्ट ऑफ द स्पीच होता है हमारा, वो पॉज कहलाते हैं। होता क्या है हमारे इसके अंदर कि हम लोगों ने डिटरमाइन करते हैं कि भाई हमारा कौन सा पार्ट ऑफ द स्पीच है वी हैव टू यूज, ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम करते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली हम चेक करते हैं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऑलराइट? सो पार्ट ऑफ द स्पीच जैसे हमारे कभी कभार क्या होता है कि कोई नाउन होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो दूसरा होता है वो नहीं होता है, ठीक है? तो इसलिए हम पार्ट ऑफ द स्पीच होता है इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन व्हाट दैट पार्ट ऑफ द स्पीच इज। अब मैंने सिमिलरली इंपोर्ट स्पेसिफिक किया एंड उसके बाद कहते हैं उसको इंग्लिश लाइब्रेरी के हिसाब से इंपोर्ट कर दिया जैसे आपको कहा था, एंड देन आई हैव डिक्लेयर्ड ओवर हियर डॉक इक्वल टू एनएलपी, लाइक उसके बेसिस पे लोड करो एंड देन फॉर एवरी टोकन, लाइक टोकन इज बेसिकली द एक एक पार्ट, रन करो उसको कि क्या है क्या वो, वेदर इट इज अ प्रोनाउन हो गया, ऑक्सिलरी हो गया, या डिटर्मिनर हो गया, नाउन हो गया, वर्ब हो गया। जैसे देखो कहते हैं दिस इज, कहते हैं इट्स पॉज, मतलब कि लाइक पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो प्रोनाउन हो गया। तो इसी वे में इसने ऐसे डिटरमाइन कर दिया, ठीक है? अब आपको हो गई चंक टेक्स्ट हो गई, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ अ लाइब्रेरी, ठीक है? तो ऐसे हम लोगों ने बेसिकली किया है, ठीक है? ऐसे आप एक काम करो, जैसे आपको लाइक डायग्राम मूवी मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये डायग्राम मैंने स्पेशली बनाया था कि आपको इट्स इजियर फॉर यू टू डिटरमाइन
कि भाई देखो ये दिस है, ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है, इस जो है ऑक्सिलरी हो गया, ऐसे ये लिंक कैसे हो रहे हैं हमारे साथ, वो हमने ये सारा कुछ दिखाया हुआ है यहाँ पर। ऑलराइट, सो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब देखो, अब व्हाट यहाँ पर हमने कभी कभार क्या होता है कि ऐसे आपको समझ नहीं आता कि भाई क्या दिया क्या हुआ है। जैसे डिड का मतलब क्या होता है, डिड हमें वैसे तो पता चल ही जाता है कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है, डोमिनेटेड होता है। तो मैं क्या करते हैं, हम स्पेसी को बोलते हैं कि भाई एक्सप्लेन कर दे कि भाई जो एब्रिविएशन दैट यू हैव यूज्ड ओवर हियर व्हाट डज दैट मीन, तो स्पेसी विल एक्सप्लेन, वो एब्रिविएशन को एक्सप्लेन कर दे कि व्हाट डज इट मीन। This is what basically part of a speech means. Alright, ये जैसे कोई यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी यूजेस क्या होती है, जैसे कि नेम एंड रिकग्निशन में हेल्प करता है ये। बट जैसे कहते हैं कि सेम नाउन्स को जो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो वर्ड होगा, जो हमें बेसिक ऑब्जेक्टिव वर्ड ऑफ दैट कहते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा एंड उसको क्लासिफाई कर देगा हमारे लिए इजीली। ऑलराइट, सो नाउ आई वांट दैट कि आप सबके सब इसको कनेक्ट कर लो, या कॉपी ड्राइव करके कनेक्ट करके एंड रन ऑफ द होल ऑफ द कोड्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस Jupyter notebook, you can tell me, I'll clear those doubts for you guys, and उसके अलावा भी आपको है तो बता देना मेरे को, I'll drop me a message, me or Tanav will like see the doubts and answer them accordingly. I'm giving you 2 minutes to run the notebook over here. Basically, so someone asked like, what is the difference between stemming and कहते हैं लेमेटाइजेशन। तो लेमेटाइजेशन में क्या होता है कि भाई हम लोग को ना क्लासिफाई करना था वर्ड ऑन सेम बेसिस, ठीक है। लाइक हम बेसिकली हम क्या करते हैं, जो वर्ड्स जो सिमिलर होते हैं ना वहाँ पर लेमेटाइजेशन जो प्रोड्यूस होते हैं, दे शुड हैव मीनिंग ओवर देयर। वेयरएज जो हमारा कहते हैं स्टेमिंग के जो हमारे वर्ड्स आते हैं उनको नेसेसरी होता है कि उनका मीनिंग होए भी या नहीं भी होए। दिस इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन। लाइक जो वहां पे आपका लेमा जो प्रोड्यूस होता है ना, वो मीनिंग उसका उसको कोई ना कोई मीनिंगफुल बेस होएगा तभी वो प्रोड्यूस हुआ है, अदरवाइज इट वोंट बी प्रोड्यूस्ड। आई होप आई एम क्लियर over here. Anyone has any doubts in pause, please ask. Guys, anyone has any doubts, please ask. Anyone from this library, if anyone has any doubts, please ask, please. I'm open to questions. None? All right. So what we do is like we move on to the next PPT, next Jupyter notebook, that is the stop words one. अब इसमें क्या होता है, लाइक स्टॉप पर आपको बताया था कि जो वर्ड्स वो होते हैं जो कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग नहीं होते, जैसे कि हम ऐसे नॉर्मल ह्यूमन इंटरेक्शन के बीच में ऐसे बहुत वर्ड्स होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, जैसे दिस हो गया, दोज हो गया। these words do not contain any meaning, so इसलिए हम ये words वो words होते हैं जिनको हम remove कर सकते हैं, and the meaning of the sentence या meaning of the word जो होता है वो still remains the same, ठीक है। अब जैसे सिमिलरली इसके अंदर हमने स्पेसी की थ्रू वो जो लाइब्रेरी होती है वो सेम इंक्लूड करी। एनएलटी के एक और कहते हैं हमारी एनएलपी की लाइब्रेरी होती है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, स्टॉप वर्ड्स की डिक्शनरी जो थी पूरी की पूरी कॉल कर ली, ठीक है। अब आपको दिखाने के लिए मैंने क्या किया कि सारे सारे स्टॉप वर्ड्स जितने भी थे ना वो फर्स्ट मैंने प्रिंट कर दिए, लाइक यू कैन सी ओवर हियर, became, because, become, becomes, becoming, been, before, it kind of all stop words there, and we just point कर देते हैं to the person or just act as a helping noun के लिए या कुछ helping में बोलते हैं वो उससे act करते हैं, nothing else except that. So इसलिए this they can be removed from the library depending on the necessary event, but mostly they are removed, so इसलिए हम लोग करते हैं। and ये जो तकरीबन ये जो dictionary बनी है, list बनी है, it consists of 326 words over here.
तो क्या करते हैं लोग, कभी कभार हमें से को चेक कराने के लिए कि कोई वर्ड हमारा है या नहीं है इन द वोकैबुलरी, तो हमने क्या किया, एनएलपी डॉट वोकैब किया। वोकैब में जो भी हम लोगों ने वर्ड यूज करना था वो डाल के हम लोगों ने डाल दिया इज स्टॉप। ठीक है, तो इज स्टॉप डाला तो हमारे पास चलेगा कि भाई ये हमारा जो वर्ड है ट्रू है, कहते हैं हाँ एग्जिस्ट करते हैं इन लाइब्रेरी, अदरवाइज इफ फॉल्स आता तो कहते हैं डजंट एग्जिस्ट आ जाता। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि भाई कैसे हम स्टॉप वर्ड देखेंगे, ऐड करना हुआ टू, कभी हमने ऐड करना पड़ता है स्टॉप वर्ड, तो हम उसको ऐड कर, जैसे कैसे ऐड करना है वो भी चेक कर लिया। अब ऐड करने के बाद देखेंगे, अब चेक करेंगे कि है नहीं है, लाइक ये चलता रहता है हमारा। ठीक है, ऑलराइट। सो अब जैसे देखो, आपको बताता हूँ, लेंथ ऑफ द स्टॉप वर्ड्स आफ्टर इंक्लूजन इज 327। हमने वहां पर वेल बीइंग जो था वो वर्ड ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, और देखा कि अब पहले 326 था डिफॉल्ट, हमने ऐड करने पे 327 हो गया। दिस इज व्हाट हैपेंस ओवर हियर। अगर हमें रिमूव करना है, वही तो हम लोगों ने रिमूव का ऑप्शन लगा दिया, लाइक एनएलपी डॉट डिफॉल्ट और स्टॉप स्टॉप अंडरस्कोर वर्ड्स डॉट रिमूव कर दिया। ऐसे चलता रहता है। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर, इंडेक्सिंग हम लोगों ने करी, कभी सेंटेंस दिया एग्जांपल ऑफ स्टॉप वर्ड्स फॉर दोस डेमो पर्पसेस ओनली, लाइक अब हमने क्या किया, टोकनाइज कर दिया एन एग्जांपल ऑफ स्टॉप वर्ड्स फॉर दोस करके, एंड देन हमने चेक किया कि भाई दोस जो यहाँ पर है या नहीं है, ऐसा कहते हैं स्टॉप वर्ड और नॉट, वो चेक किया तो वो उसने ट्रू दे दिया। दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। लाइक ये स्टॉप वर्ड्स को हम रिमूव कर दें ताकि वो नो, उनका कोई जिनका मीनिंग नहीं होता, जस्ट ऐड टू द लेंथ ऑफ द सेंटेंस, उनको हमें रिमूव करना पड़ता है फॉर इजी प्रोसेसिंग ऑफ अ मशीन एंड द मॉडल दैट वी हैव टू ट्रेन। सो इसलिए हम ये स्टॉप वर्ड्स होते हैं इसको रिमूव कर देते हैं। एनीवन इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स प्लीज आस्क। हम कहते हैं रन थ्रू दिस होल ऑफ दिस, कहते हैं जुपिटर नोटबुक, लाइक रन इट वंस अकॉर्डिंग टू योर विल एंड देन आस्क एनी डाउट्स अबाउट इट। We are open to questions. Guys, please ask questions about it. Yeah, I had a question. As you mentioned that these stop words are the ones that only add to the length and don't have a necessary meaning, right? But जैसे what हो गया एक word इसमें लिस्ट में है, right? But what basically हमको एक रिलेशन देगा कि इस चीज के बारे में बात हो रही है, right? तो फिर won't that make sense कि what से हम लोग क्या कहते हैं लिंक कर रहे हैं बेसिकली किसी चीज को in a sense, या फिर ये आप ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि वो पर्टिकुलर वर्ड हमने एक बार प्रोसेस कर लिया उसके बाद हम लोग स्टॉप वर्ड्स निकाल रहे हैं सारे। देखो पता है होता क्या है, बेसिकली वो व्हाट जो उसका रिलेशन रहता है फॉर श्योर, बट कहते हैं, बट पता है क्या होता है, हम नेचुरल लैंग्वेज में प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं ना, हमें उसका रिलेशन नहीं देखना होता, हमें उसको ये देखना होता है कि उसकी क्या वेटेज जो है इन अ सेंटेंस वो क्या होल्ड करता है। मतलब ऑफ कोर्स यू कैन टेल द रिलेशन टू अस, बट हमने जैसे अब देखो कोई भी जैसे नाउन होता है वो बताता है कि भाई इसमें से क्या बता रहा है हम लोगों को। ठीक है, बट क्वेश्चंस एंड ऑल का स्टिल इट्स गोना बी लाइक डिफिकल्ट, या कैसे हम उसको रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी, जो नेसेसिटी हमारी होगी हम उसके हिसाब से कर सकते हैं, लाइक हम दिखाया था कि ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ओन विल। जस्ट काइंड ऑफ अ डिफॉल्ट लिस्ट that exists over here, that's it, nothing else, but these are the most common ones that we remove, that's why Mm. it's been mentioned over here. All right, thank you.
Alright guys, so हम एक और if you guys have done with this, so we'll move with the next कहते हैं Jupyter notebook. उसके अंदर we keep that Jupyter notebook as the कहते हैं stemming one. Alright, I guess we have not done this. Alright, we have not done this, so let's just open the stemming notebook over here and we go through the stemming notebook. आपको बताया था कि स्टेमिंग नोटबुक स्टेम का स्टेमनाइजेशन का मतलब क्या होता है। स्टेमनाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी जो हमारा होता है ना कि लाइक वर्ड उसका रूट वर्ड क्या होता है वो निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्टेम कहते हैं स्टेमनाइजेशन। ठीक है, अब स्टेमनाइजेशन के अंदर क्या होता है, वो स्नोबॉल स्टेमर्स होते हैं बेसिकली, कॉमनली उस पर डिप्लॉय करते हैं। बाकी अलग अलग के अलग अलग तरीके के स्टेमर्स होते हैं, बट स्नोबॉल स्टेमर इज द मोस्ट कॉमनली यूज। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर पोर्टर स्टेमर यूज किया पहले, लाइक इट्स ये बेसिक होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो हमने बेसिकली लिखा कि भाई यहाँ पे स्टेमर, मैंने यहाँ पे वर्ड्स दे दिए इसको लिस्ट के अंदर, प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामर, प्रोग्राम, प्रोग्रामेटिकली। ठीक है, these words might be existing, might not be existing, मतलब ठीक है। तो अब इसका इसने क्या किया, इसका रूट वर्ड देख लिया कि भाई प्रोग्राम का प्रोग्राम ही होगा, प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम होता है। लाइक रूट वर्ड इज बेसिकली दिस, किस वर्ड से वो डिराइव किया गया है, किसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब एक ये जो P1T के जो डाटा सेट है, एक काइंड ऑफ समझ लो लिस्ट होती है, तो वो कॉल करी, डाउनलोड करी हम लोगों ने पहले। इसके बेसिस पे हमने पोर्ट स्टेमर लगाया टोकनाइज करके, पहले वर्ड्स की जो लाइन दी हुई है उसको टोकनाइज किया, फिर हमने निकाला। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो द वर्ड ओनली एंड स्टेम ओनली। ठीक है, इसका अब देखो यहाँ पर जो वर्ड आया है ये अलग आया है, लाइक दिस इज नॉट द राइट वर्ड आई विल से ओवर हियर। ठीक है, ऐसे चलता रहता है, लेकिन वही होता है स्टेमनाइजेशन में होता है कि द मीनिंगफुल वर्ड आए ना आए वो डिपेंड नहीं करता, लाइक बल्कि लेमनाइजेशन में जो होता है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि वो वहां पर जो लेमा जो आता है ना, वो एक मीनिंगफुल वर्ड ही देगा। This is what the basic difference between कहते हैं lemonization is and stemming is. That's why lemonization जो होती है वो थोड़ी कहते हैं उसकी complexity wise वो complex होती है, और ये जो होती है easy होती है। Alright, so same like हमने कहते हैं पूरा रन करके दिखा दिए। अब यहाँ पर right over here in this block, और what मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने कहते हैं लैंकेस्टर स्टेमर जो होते हैं वो यूज करके दिखा दिया। लाइक डिफरेंट ये भी अलग तरीके का स्टेमर होता है। अब हर काइंड ऑफ क्या होता है, काइंड ऑफ लाइब्रेरीज है डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की, जैसे लाइब्रेरीज होती है तो हम यूज करके दिखा लेते हैं, बट हर एक लाइब्रेरी की अपनी लिमिटेशन होती है विच यू कैन सी थ्रू कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के। कभी बार कोई चीज यहाँ पर नहीं होगी, कोई चीज यहाँ पर नहीं होगी, बट मोस्टली लोग जो यूज करते हैं वो स्नोबॉल स्टेमर होता है। लैंकास्टर एंड कहते हैं जो पोर्टर यूज किया है लोगों ने वो इतना नहीं यूज करते हैं लोग। So guys, just run this notebook once, and I'll wait for you guys to run this notebook first. And if you guys have any doubts, so ask me in the chat box or in the uh, by unmuting yourself for 2 minutes, and you can ask even about that. Or you can even message Sanab or me directly. We'll answer it also in the chat or by on the call. Take 2 minutes and please run the whole notebook. If you guys have doubt, tell me. Does Chat GPT also use all of these? मैम बेसिकली चैट जीपीटी का केस क्या होता है, वी डोंट नो अबाउट दैट बिकॉज उसका आर्किटेक्चर जो है वो काफी डेंस भी है, कॉम्प्लेक्स भी है फर्स्ट, एंड सेकंड उसका आर्किटेक्चर हम लोगों ने कभी देखा नहीं है क्योंकि वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है फॉर एवरीवन टू बी सीन। सो वी कांट बी श्योर अबाउट वेदर इट विल यूज दिस थिंग और नॉट, बट या वी नो वन थिंग फॉर श्योर कि एक ना ट्रांसफॉर्मर्स होता है। ठीक है, और चैट जीपीटी ट्रांसफॉर्मर्स को भी पूरा पूरा यूज करता है टू डेवलप एंड टू टेल इवन। ठीक है, ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स वी आर गोना डिस्कस टुमारो। So, like transformers basically kind of an LLP like का pre-trained models होते हैं, consist करते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, तो हम उसको वैसे देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, हम ट्रांसफॉर्मर्स कल डिस्कस करेंगे इन डिटेल। उसके अलग अलग तरीके के ट्रांसफॉर्मर्स, जैसे बर्ट हो गया आपका, GPT-2 हो गया, ये सारे तरीके आपके ट्रांसफॉर्मर्स के ही पार्ट होता है। ठीक है, anyone any doubts please?
ऑलराइट गाइस, सो आई होप दैट आप लोगों ने कर लिया होगा अभी तक यहाँ तक। आगे चले। चलो, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स टोकनाइजेशन। ठीक है। अब टोकनाइजेशन क्या होता है? ये बेसिकली करता क्या काम, आई टेल यू दैट। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको होता है जैसे कोई भी आपको सेंटेंस दे दिया वो बड़ा सा, ठीक है। अब इतना बड़ा सेंटेंस को प्रोसेस करने में आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, एंड यू डोंट नो विच वर्ड टू रिमूव फ्रॉम हियर एंड विच नॉट। तो हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस के जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, अब उस वर्ड्स को हम अलग अलग टोकन्स की तरह डिक्लेयर कर देते हैं। एक सेंटेंस के लिए हम अलग अलग लिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं, ताकि हम उस सेंटेंस की लिस्ट में जाएं, जब रीड करें, वो इटरेट करें, तो हम उसको अगर देख लेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड, उसको रिमूव करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, उसके हिसाब से हम लोग कर लें। एंड टू बी फ्रैंक, देखो आप खुद जैसे अंडरस्टैंड करो कि आप कभी भी किसी बंदे को बोलते हो तो भाई पूरा पूरा सेंटेंस ना बोलो। बच्चे को आप समझाते हो, जैसे बच्चा है उसको आप बोलते हैं कि भाई पहले ये वर्ड बोल, फिर ये वर्ड बोल, फिर ये वर्ड बोल, so that each and every word का meaning उसको पता चले, and then you tell him to combine the whole of the words so that he comes to know the whole meaning of the sentence, what that means, sentence actually means, like word by word. So this is what we do in this कहते हैं event। हम अपनी मशीन को समझाते हैं कि भाई ये हमारा सेंटेंस है, इसको हमने वर्ड्स में ब्रेक कर दिया, अब तो वर्ड बाय वर्ड समझ। इसको समझाते हैं कि भाई ये वर्ड्स रिमूव कर दे, इसकी इंपॉर्टेंस कम है, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। अब टोकनाइजेशन होती है, हम लोग कहते हैं बहुत तरीके से कर सकते हैं। टोकनाइजेशन हम यूज कर सकते हैं स्प्लिट फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे आप याद करो कि आपको बेसिक्स ऑफ पाइथन के अंदर स्प्लिट फंक्शन ही होता है हमारा, दैट डॉट स्प्लिट कर देते हैं ब्रैकेट्स में डाल के, हम कोई भी डाल देते हैं, जैसे इनवर्टेड कॉमा में स्पेस डाल दो स्पेस आ जाएगी, कॉमा डाल दो कॉमा आ जाएगा। दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप बेसिक्स अपनी पाइथन जैसे यहाँ पर हमने यूज करी है, तो सेम इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि बेसिक्स होते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, देन ओनली यू कैन मूव अहेड विद अदर डीपनिंग मॉडल्स और टफर मॉडल्स। जैसे हम यहाँ पर बिल्कुल ही बेसिक यूज कर लिया है। अब आगे टोकनाइजेशन हम यूज कर सकते हैं यूजिंग क्या कहते हैं एनएलटीके लाइब्रेरी, टीके लाइब्रेरी, ठीक है। एंड आई गेस यू गाइस टू ओपन अप द टीएसएस रिसोर्सेज बैक अगेन। एंड यहाँ पर आपको जो मैंने गूगल क्लास की नोटबुक दी हुई है फॉर टोकनाइजेशन इटसेल्फ, वो खोल लो एक बार आप लोग, ठीक है। तो यू विल सी ओवर हियर कि भाई टोकनाइजेशन कैसे काम करती है आपकी, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर वही पेपिंग सॉल्व स्पेसिफाई करके, ठीक है, मैंने कहते हैं अगर नहीं है तो स्पेसिफाई डाउनलोड करके ई एन कोर वाला इंग्लिश का जो होता है डाउनलोड कर लिया। देन मैं डॉक्यूमेंट का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पर चेक किया हाई देयर इज अ नोटबुक ऑन टोकनाइजेशन है, इसको कर दिया, फिर इसको स्प्लिट कर दिया, एंड टोकन नंबर से इमिनेट कर रहे हैं हम लोग, फिर आई विल बी द टोकन नंबर, एंड इसको फॉर्मेट कर दिया अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब ये अगर हाई कॉमा फिर देयर आ गया यहाँ पर, ठीक है, स्पेस थी तो देयर आ गया यहाँ पर, फिर कहते स्पेस आके हमने एक्सक्लेमेशन मार्क डाला, तो स्पेस के बाद हमारा कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क अलग तरीके से टोकन बन गया। दिस आ गया, इज आ गया, आ गया, नोटबुक आ गया, ऑन आ गया, टोकनाइजेशन आ गया। अब अगर इज और कॉमा के बीच में अगर स्पेस होती है तो कॉमा भी एक अलग टोकन बन जाता है। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली टोकनाइजेशन मीन्स। अब देखोगे आप इस टोकन की पूरी लिस्ट बना दोगे, इस लिस्ट को आप एक्सेस करोगे इटरेशंस के थ्रू, तो इट विल बी easier फॉर यू टू कहते हैं इटरेट करना या कहते यूज करना एंड स्टडी करना, and it will be easier to in terms of कहते competition power even if we exhausted हो गए, ठीक है। ऐसे हम लोग यूज करते हैं। अब जैसे सपोज मैं सिमिलरली यहाँ पर किया, अब देखो यहाँ पर करके हम लोगों ने ऐसे रन कर दिया, एक बारी सारी सारी आप इसमें रन कर दो, यहाँ पर आपका जो कहते हैं मैंने सेंटेंस डिक्लेयर कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस डिक्लेयर कर दी है। तो दिस इज व्हाट आई डिड। अब मैंने टोकनाइजेशन यहाँ पर पता है क्या किया, जैसे यू को मैं अलग वर्ड दे दिया, लाइक अलग टोकन का नंबर दे दिया, लाइक U1, हाई को 2 दे दिया, दिस को 3 दे दिया। अब मैंने इनको क्या किया, बेसिकली सेंटेंसेस ऊपर गिवन थे उनको मैंने उस फॉर्मेट में प्रोड्यूस कर दिया, लाइक ओवर हियर, लाइक 2 3 4 5 6 7 8। तो बेसिकली मैंने सीक्वेंस को प्रिंट किया इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, नॉट इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स और स्ट्रिंग अल्फाबेट्स वगैरह। तो ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि वैसे मैंने कहते हैं कैसे इजी वे में करते हैं हम, नंबर्स के वे में भी डिपिक्ट कर सकते हैं, टू मेक आवर मशीन अंडरस्टैंड दिस थिंग। Go through this notebook once again and let me know about it. Okay, guys. So if you guys have any doubt, take your time, run this notebook, and ask the doubts about it.
So what I did over here is कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ना कहते हैं डिफरेंट जो होते हैं ना आपकी लाइब्रेरीज होती हैं, लाइक मैंने क्या किया बेसिकली सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ड्स होते हैं उनको अलग अलग नंबर दे दिया, एंड नंबर दे के मैंने आगे कहते हैं नीचे डिक्लेयर कर दिया, लाइक कहते हैं यू को वैसे 1 दे दिया, हाई दे दिया। अब देखो सेंटेंसेस ऊपर सेम के सेम डिक्लेयर थे, अब 2 जो है मेरा हाई है तो हाई पहले आया हुआ है, देन जैसे दिस के जो 3 है तो 3 आ गया यहाँ पर, 2 3 4 5 6 7 8 इस बेसिस पे मैंने डिक्लेयर किया हुआ है सेंटेंसेस को इन फॉर्म ऑफ नंबर्स कर दिया। दिस इज व्हाट आई हैव डन इन सीक्वेंसिंग ओवर हियर। ऑलराइट, anyone any doubt please? One represents you over here, so you can see glad to see you there. तो यहाँ पर सेकंड के अंदर हम देख रहे हो जब you जो है वो यहाँ पर 1 की सेकंड लिस्ट के अंदर सेकंड लास्ट वर्ड पे आ रहा है, वो इसलिए बिकॉज glad to see you here। तो ऐसे सिमिलरली समझो सीक्वेंसेस जो ऊपर जो दिए हुए हैं ना वो इसी वे में है, ठीक है, तो इसलिए हम सीक्वेंसिंग ऐसे करिए। यहाँ पर जो मैंने नंबर कॉल वर्ड जो यूज किया ना बस जस्ट टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वर्ड दैट आई हैव यूज्ड इन माय डिक्शनरी, जो लिस्ट है वहां पर जो यूज किया उसके लिए मैंने रिप्रेजेंट किया, दैट्स इट। गाइस आई एम ऑडिबल? ओके, ऑलराइट। सो क्या हुआ यहाँ पर बस मैं जस्ट टू डिक्लेयर द नंबर ऑफ कहते हैं वर्ड्स ओवर हियर उसलिए मैं डिक्लेयर किया है, बट इट डजंट रिक्वायर कि आपने क्या होता है कभी कभार फिर ज्यादा वर्ड्स होते हैं उसको ना डिक्लेयर कर कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, इट विल जस्ट इंटीग्रेट ओवर थ्रू, बस टू डिक्लेयर ओवर हियर द नंबर ऑफ वर्ड्स और उनको कहते हैं वो देने के लिए मैंने किया है यहाँ पे। Any other doubts, anyone? और guys, so हम आगे चलते हैं। Next is engrams. Engrams क्या होता है? Basically, engrams is also kind of a way while जिस way में हम लोग कहते हैं divide करते हैं अपने sentence को। जैसे engrams होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं। Sometimes अगर n equal to 1 है तो unigrams कह लेते हैं, अगर n equal to 2 है तो हम कहते हैं bigrams कह लेते हैं, अगर 3 है तो trigrams कह लेते हैं। जैसे देखो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ इतना सही आपको कहते हैं इमेज के अंदर, दिस इज अ सेंटेंस है, अगर यूनिग्राम कर रहे हो दिस इज अ सेंटेंस, अलग 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 हो गया। अब यूनिग्राम बाईग्राम अगर आपके पास तो दिस इज इकट्ठा हो गया, इज अ इकट्ठा हो गया, अ सेंटेंस इकट्ठा हो गया, ठीक है। ट्राइग्राम से दिस इज अ इकट्ठा हो गया, इज अ सेंटेंस इकट्ठा हो गया। अब तो इसीलिए हमारा यूज करते हैं हम लोग। अब एक बात बताओ, जैसे आपको बताता हूँ कि आपको डाउट होगा कि भाई वाई जैसे कहते हैं हम लोग टोकनाइजेशन और एनग्राम में डिफरेंस क्या होता है, तो दोनों के अंदर बीच में डिफरेंस इसलिए होता है कि भाई अब जो एनग्राम्स होता है ना किसी सक्सेसिव टर्म जो सीक्वेंस में आता है, ठीक है, बट वेरा सबका टोकनाइजेशन होती है वो ऊपर नीचे कभी भी हो जाती है। जैसे आपने देखा था लास्ट में कि भाई यू पहले आ गया, हाई बाद में आ गया,
तो ऐसे ऐसे भी टोकनाइजेशन होती है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है, बट एनग्राम्स इज ऑलवेज इन द वे ऑफ अ सीक्वेंस, ऑलराइट. So this is what why we use n-grams over here. All right. So moving on next, वेक्टराइजेशन. वेक्टराइजेशन क्या होती है, हेल्प करता है टू मैप द वर्ड्स टू अ वेक्टर ऑफ रियल नंबर. मतलब ये होता है कि अब अलग अलग तरीके होते हैं. वर्ड टू वेक हो गया. वर्ड टू वेक बेसिकली एल्गोरिथम्स होते हैं. एक एल्गोरिथम होता है जिसके हम लोग बेसिकली कहते हैं बहुत इजीली क्या होता है किसी वर्ड को वेक्टर की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं. अब TF-IDF क्या होता है, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी. एक हैंडी एल्गोरिथम होता है दैट यूजेस कहते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स टू डिटरमाइन हाउ रेलेवेंट दोस वर्ड्स आर टू द गिवन डॉक्यूमेंट. मतलब एक पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा, उसको देखिएगा भाई कितने उसकी फ्रीक्वेंसी और कितने उसके डॉक्यूमेंट में वर्ड्स टोटल हैं एंड हाउ मच दे आर रेलेवेंट टू दोस वर्ड्स कहते हैं इन द डॉक्यूमेंट, तो वैसे कर देगा. अब काउंट वैल्यू होता है, काउंट नंबर ऑफ टाइम्स, लाइक उसकी फ्रीक्वेंसी देखता है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स आया है और उसकी बेसिस पे वो कहते हैं उसकी वेक्टर्स बनाता है. तो अलग अलग तरीके होते हैं वेक्टराइजेशन के. जैसे आपको मैं दिखाऊंगा कि मेरी कैडबरी नोटबुक में मैंने ग्लव यूज किया है. एंड ग्लव जो एक कहते हैं काइंड ऑफ थोड़ा एडवांस वर्जन होता है ऑफ कहते हैं वर्ड टू वेक का भी. ठीक है. वर्ड टू वेक जो होता है आपका इसका वर्ड टू वेक क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ बोथ अ बैग ऑफ कंटिन्यूअस वर्ड्स इवन एंड TF-IDF इवन. ठीक है. तो समझ सकते हो कि वर्ड टू वेक जो हुआ वो बेसिकली कहते हैं इसका काफी एडवांस वर्जन हुआ एंड वर्ड टू वेक का भी एडवांस वर्जन ग्लोब होएगा. ठीक है. अब इससे जब आपको मैं नोटबुक जो है कैगल की जो इफ यू गाइस वांट टू ओपन एंड कॉपी एडिट करके देखोगे वहां पर उसके कोड जो नीचे आता है कि वहां पर जो वर्ड एम्बेडिंग्स हैं, तो वहां पर तकरीबन ग्लव्स के अंदर 21 लाख वर्ड एम्बेडिंग्स थी. ठीक है. तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि भाई कितने वेक्टर्स बन गए हमारे. ऑलराइट. सो मूविंग ऑन नेक्स्ट इज अ मशीन ट्रांसलेशन. ऑलराइट. मशीन जैसे आपको बताया था कि मैंने मशीन ट्रांसलेशन जो होती है हम लोग क्यों यूज करते हैं टू ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. ठीक है. तो मैंने क्या किया, अब जैसे बताता हूँ एग्जांपल, इसका क्वाइट इजी एग्जांपल आई गिव यू टू गाइस. अब जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं रिसर्च में क्या है मेरे पास ना कहते हैं एक मशीन है, लाइक आई हैव गॉट डाटा फॉर इंग्लिश एंड उसको मैं कन्वर्ट करना है तो हिंदी ट्रांसक्रिप्ट. ठीक है. जब मेरे को मैं इसके लिए NMT लगाऊंगा, न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन. ठीक है. अब उसके बेसिस पे मैं चेक करूंगा कि भाई मेरी जो ट्रांसलेशन हो रही है वो सही हो रही है नहीं हो रही है. ठीक है. अब NMT का ऐसा भी योलो देखो, याद करो योलो के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, एक बेसिक ऑब्जेक्ट डायरेक्शन का काम करता है योलो, बट उसको एक आर्किटेक्चर जो होता है वो अलग से दिया हुआ था. राइट. एग्री. तो वैसे ही NMT के अंदर जो भी हमारा काम जो होता है वो मशीन का ट्रांसलेट करने का काम होता है, बट उसके अंदर हमारा आर्किटेक्चर जो होता है वो RNN का हो सकता है, LSTM का भी हो सकता है. ठीक है. बाय डायरेक्शन LSTM भी हो सकता है, GRE भी हो सकता है. और ये RNN and LSTM will be declaring talking about in detail in the next slides. ठीक है. तो this is what machine translation is all about. Yes, for the moment मैंने जैसे अब मैं अभी जो रिसर्च कर रहा हूँ उसमें मैं कहते हैं ट्रांसफॉर्मर्स यूज कर रहा था, तो अब यू कैन यूज एनी जो ट्रांसलेशन में हेल्प करे उसको हम कह सकते हैं NMTs, कहते हैं NMTs की तरह यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो guys, it's 4:10 at the moment. If you guys have any doubts, we'll first discuss all of your doubts till 4:12, 4:30 or 4:15. Then after that, we'll take a break from 4:15 onwards for 20 minutes. Any doubts, anyone, they can drop a message to me or Tanav in the chat box. And you can even ask by unmuting yourself. Guys, any doubts, please do ask. Can you please tell TF, IDF and count vectorization once again? It was not clear. TF जो होता है ना, इट इज बेसिकली एल्गोरिथम होता है. जैसे आप इस वो से देखो, आपको इजीली मैं बताता हूँ. काउंट वेक जो है इट यूजेस द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब मोड यूज कर लेता है इन द कहते हैं डॉक्यूमेंट, कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो वर्ड रिपीट हुआ है उसके बेसिस पे वेक्टर्स बनाता है. बट जो TF-IDF होता है टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी जो होता है, ये क्या करते हैं, ओवरऑल वेटेज देखता है उस वर्ड की कितनी है हमारी, हाउ मच डिटरमाइन कितने करता है वो वर्ड, उसकी वेटेज क्या है उस वर्ड की फोर ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंड उसके बेसिस पे वो कहते हैं वेटेड स्कोर के बेसिस पे वो निकालता है कि वो वेक्टर बनेगा या नहीं बनेगा. बट अब इसका एडवांस वर्जन जो है वो है M2 जो वर्ड टू वेक है वो हम यूज करते हैं. दिस इज स्टिल बेसिक वर्जन. तो आपका इसका मैंने क्या कहते हैं इसकी नोटबुक भी दी हुई है TF-IDF की. यू कैन रन दैट इवन टू सी इट ओवर देयर. ठीक है. Okay, तो thank you. या नो इश्यूज.
Guys, please, if you guys have any doubts, to please ask in the chat box or by unmuting yourselves. Yeah. Guys, if you guys have any doubts, please ask. I guess there are no doubts. Pranav even doesn't have anyone. So, all right. So, what we'll do is we take a break till 4:35. All right. It's a break for 25 minutes. We'll start the session at 4:35, 40. All right. All right. So, since they're none, so we'll start with the questions ahead, topics ahead. So, we discussed about Yeah, so we discussed about what machine translation is and how do we use RNN in that. So we're going to talk about RNN in detail now. RNN is basically a recurrent neural network. Like you guys might have studied about CNN. So CNN का like आपने पढ़ा था कि convolution CNN जो होता है convolutional
न्यूरल नेटवर्क होता है, वैसे ही न्यूरल नेटवर्क एक ये हमारा रेकरेंट होता है। इसका ये होता है कि इसकी मेमोरी होती है, काफी शॉर्ट मेमोरी होती है इसके पास, ठीक है। एंड इसके जो फंक्शंस आप जैसे जैसे वन टाइप्स ऑफ आरएनएन जो है, दे आर बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस। जैसे ना 1 to 1 हो गया, ओनली वन पेयर होता है वहां पर। जैसे सिमिलर फंक्शंस में 1 to 1 फंक्शन होता है, 1 to many फंक्शन होता है। इन द सेम वे ओवर हियर टाइप्स ऑफ आरएनएन भी सेम होते हैं। जैसे हमारा मेनी टू मेनी के अंदर देयर आर न्यूमरस ऑप्शंस होती हैं, वहां पर मेनी टू मेनी फंक्शन में अलग अलग ऑप्शंस होती हैं। इन द सेम वे आरएनएन का जो होता है हमारा वो ये होता है, ठीक है। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, हाउ डज रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है वो वर्क कैसे करता है। सो यू कैन सी ओवर हियर एक्स एच वाई की होती है इनपुट लेयर बन गई हमारी ऐसे। एंड अब क्या होता है, जो एच जो है वो रिप्रेजेंट द हिडन लेयर। अब होता क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक ही हिडन लेयर बनी होती है, उसके बेसिस पे एक हमारा फॉर लूप चल रहा होता है। वो फॉर लूप जो होता है जैसे करेंट डिपिक्शन ऑफ कि भाई हाउ कहते हैं नंबर ऑफ टाइम्स कहते हैं हिडन लेयर्स होती है रिपीट करी जाएंगे, लाइक वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये रेकरेंट बन जाता है। लाइक एवरी लेयर जो हिडन लेयर होती है उसके अंदर देयर आर कहते हैं ईच ऑन ऑफ विच हैज ओन कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन हो जाएगा, वेट्स हो गया, बाइसेस हो गया। आई होप दैट यू ऑल गाइस नो व्हाट एक्टिवेशन फंक्शन इज, वेट्स क्या होते हैं, बाइसेस क्या होते हैं, वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर इन प्रीवियस सेशंस इवन। सो दिस इज ऑल अबाउट कहते हैं रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता क्या है। आई एक्सप्लेन अगेन, इमेज गई, ठीक है, उसके इनपुट लेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इसको हम एम्बेडिंग लेयर भी कहते हैं। इनपुट लेयर को हम बेसिकली एम्बेडिंग लेयर इसलिए कहते हैं बिकॉज वो बेसिकली मैप करता है डिफरेंट फीचर्स ऑफ द डिफरेंट कहते हैं टोकनाइजर्स एंड हेल्प टू डेवलप द रिलेशन बिटवीन देम। ऑलराइट, सो दिस इज नोन एज एम्बेडिंग लेयर। तो वहां से हमारी इनपुट इमेज गई या टेक्स्ट गया जो भी था, फिर वहां से कहते हैं हमारा जो वो होता है लाइक हिडन लेयर्स होती है, दे कीप ऑन रिपीटिंग। एंड अब यू माइट गाइस हैव अ डाउट कि भाई यार कीप ऑन रिपीटिंग देन हाउ डज इट स्टॉप और व्हेन डज इट स्टॉप। तो ये होता क्या है, भी डिक्लेयर है कहते हैं टाइम स्टेप्स ओवर हियर। एंड जब तक वो टाइम स्टेप्स होते हैं एंड नहीं करते, टाइम स्टेप्स इक्वल्स टू 12 कर दिया, 10 कर दिया, तो हम लोग कुछ भी कर देते थे वहां पर, तो वो कीप्स ऑन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, तो वहां तक वो रिपीट करता रहेगा, ठीक है। एंड व्हेन कम्स टू आरएनएन का जो नेटवर्क होता है नेटवर्क, इट कम्स टू एन एंड ओवर हियर। So I request you guys to all to open up the diagram notebook that I provided you with. Like this is the one. इसके अंदर you can see over here is this notebook is all consisting of RNN, LSTM and GRU basics. We're gonna discuss about RNN and LSTM at the moment. GRU, you have to guys get do it on your own and read the task, get back your home and read over here. ठीक है? And understand if you have any doubts, we'll discuss those doubts about GRU tomorrow. Okay, so moving on ahead, मैंने यहाँ पर TPUs use किए थे इस library के अंदर to अब इसके बाद I'm going to use like transformers and BERT over here, so TPU will be required in that, but I just declared in the starting so that we can use it. Okay, so what I did was the dataset consisted of GLOVE and the multilingual toxic comment classification थी। Basically हम kind of sentimental analysis यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो GLOVE जो आपको बताया था कि GLOVE जो होता है consist of like 21 lakh iterations होती है, मुझसे vectors ढूंढे थे इसलिए वो थी। So I show you the model of a simple RNN, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, this is what how I declare an RNN की like RNN की basic embedding layer डाल दी, simple RNN के लिए डाल दी, dense layer डाल दी। तो जैसे हमारा RNN डिक्लेयर हो गया, बेसिक जो मॉडल है वो डिक्लेयर कर दिया। एंड भी देन इस मॉडल के अंदर हम लोगों ने डिक्लेयर किया, इसके हम लोगों ने अपने कहते हैं जो पैरामीटर्स होते हैं वो हमारे हमने फिट कर दिए इसके अंदर, एंड इसके बेसिस पे हमारे पास इसकी एक्यूरेसी आ जाती है, ठीक है। तो ऑन ट्रेनिंग द मॉडल तो हमारी एक्यूरेसी जो आई है वो तकरीबन 83% आई है, व्हिच इज नॉट सो ग्रेट एंड एज कंपेयर टू व्हाट LSTM जिसका काफी एडवांस वर्जन है उसने दिया, GRU ने दी, ठीक है। अब इसका ना होता क्या है, व्हाट वी डू इज कि हम लोग यहाँ पर RNN का जो एडवांस वर्जन है दैट इज कहते हैं LSTM, वो इसलिए है बिकॉज यहाँ पर वेरिएशन ग्रेडियंट की जो प्रॉब्लम होती है वो एग्जिस्ट करती है एंड इसकी बहुत ज्यादा शॉर्ट मेमोरी भी है, इसी कारण हम लोग रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स जो होते हैं वो यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए वो रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क से वो यूज नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कहते हैं, हम व्हाट वी डिड इज कि हम लोगों का RNN को जो लिमिटेशन है उसको कोप अप करने के लिए व्हाट वी डू इज कि हम कहते हैं जो हमारा ये है LSTM जो है, दिस इज व्हाट एम्बेडिंग लेयर इज ऑल अबाउट, यू कैन रीड ओवर हियर, आई शो यू वंस। हाँ, उस लिमिटेशंस को हम लोगों को कोप अप करने के लिए हम लोगों ने LSTM किया। LSTM इज बेसिकली लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसके अंदर होता क्या है, इसके पास मेमोरी जो होती है कंपैरेटिवली ह्यूज एज लार्ज होती है एज कम्पेयर टू व्हाट कहते हैं RNN कंसिस्ट ऑफ। तो इसलिए आई से कि भाई RNN जो LSTM होता है, इट इज अ बेटर मॉडल एज कम्पेयर टू RNN, बट इट इज मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ कहते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में देखेंगे काफी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको यूज नहीं करते हैं।
इसको यहाँ पर फिर यूज करते हैं rather than कहते हैं RNN1, ठीक है। इसका बेसिकली आई टेल यू द आर्किटेक्चर ऑफ इट। इसका पता है क्या होता है, इसकी लेयर्स एंड ऑल द सेम रहती है, बट द व्हाट द मेन थिंग अबाउट इट इज कि भाई कंसिस्ट ऑफ गेट्स, लाइक आप कैन सी ओवर हियर गेट्स होते हैं। इसके ऐसे गेट्स कंसिस्ट करते हैं कि इनका 3 गेट्स होते हैं बेसिकली, इनपुट गेट, आउटपुट गेट एंड कहते हैं फॉरगेट गेट। इनपुट गेट से अपने फीचर्स जो होते हैं अंदर जाते हैं, फॉरगेट गेट जो आपका काम करता है ये करता है कि जितने भी रिक्वायर्ड फीचर्स नहीं होते हैं वो उसके चले जाते हैं, ताकि वो कहते हैं बाहर निकलना तो निकलते हैं, बिकॉज दोज आर नॉट रिक्वायर्ड बाय अस। एंड आउटपुट गेट जो होता है वो फीचर को यूज करके जो हमारे मॉडल ट्रेन होगा वो आउटपुट गेट के बेसिस पे ही होएगा। ऑलराइट, अंडरस्टूड गाइस। सो इसके बाद कहते हैं हम लोग को क्या करेंगे, LSTM के अंदर आपने देखा होगा जो लेयर है, जो सी लेयर जो आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली सेल स्टेट होता है। ये काम क्या करता है, इट मेक श्योर कि जो डायग्राम जो हमारी जो स्टेट होती है डजंट गेट चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमारे हर एक इमेज के अलग अलग थोड़े बहुत फीचर्स होते हैं, उनके बीच में लिंक ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमारे कहते हैं हर एक इमेज अगर आई उसने हमने अगर आपसे चेंज कर दिया अगर स्टेट उसकी मॉडल की, अगर हम इंटीरियर ना जाए तो ओवर देखते हम इंटीरियर से चेंज कर दी, देन इट्स गोना बी कहते हैं डिफिकल्ट अबाउट कहते हैं मॉडल हैविंग अ परफेक्ट एक्यूरेसी। तो इसलिए हम लोगों ने सेल स्टेट जो होता है वो उस कन्वेयर बेल्ट की जो स्टेट होती है उसको मेंटेन करता है। दिस इज व्हाट बेसिक LSTM मॉडल मींस ओवर हियर। ऑलराइट, आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड टिल द मोमेंट टिल टाइम ओवर हियर। अब आपको मैंने बेसिकली आपको जो गिव अ ब्रीफ अबाउट व्हाट RNN और LSTM जो है उसको इसमें डिफरेंसेस क्या हैं मैं आपको बता रहा हूँ। RNN जो होता है वो काफी सिंपलर है इन टर्म्स ऑफ इस कॉम्प्लेक्सिटी एंड आर्किटेक्चर, बट ये जो आपका LSTM है इट इज कहते हैं कॉम्प्लेक्स होता है, वो डिफिकल्ट टू ट्रेन है, एग्रीड, बट कहते हैं इट इज मच LSTM जो होता है उससे काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जैसे व्हाट आई डिड वाज दैट मैं रिसर्च के अंदर आई वाज प्रोसेसिंग विद द फ्रेम्स, तो RNN के आगे ना काफी उसकी रिक्वायरमेंट्स जो थी उसमें मैंने क्या किया, टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड रैप का होता है वो लगा ताकि एक चैनल जो होता है इमेज के ऊपर रैप कर जाए एंड इट इज इजियर फॉर VG16 टू रीड दैट मॉडल ओवर देयर। दिस इज हाउ इट कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग। तो अब वो जो दिस टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड रैपर था इट वाज अ ग्रेट एडवांस थिंग व्हिच आई अप्लाइड, सो इसलिए मैं आपको नहीं करूंगा एट द मोमेंट, बट हाँ व्हेन यू गो डीप इनटू द कहते हैं when you go deep into the architecture of कहते हैं RNN और कहते हैं LSTM you come to know about कहते हैं you come to know about how कहते हैं हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो नेक्स्ट डिफरेंस वो ये है कि जो RNN होता है सॉरी RNN जो होता है इज गुड फॉर सिंपलर टास्क होता है, बट जो कहते हैं LSTM होता है इट कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स टास्क इवन, एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस इफ एन इंटरव्यूअर और एनीवन आस्क्स लाइक बेसिक डिफरेंस क्या होता है RNN के अंदर एंड क्या प्रॉपर्टी है व्हिच कैन बी यूज कर सकते हैं। तो इसका यही होती है सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कि भाई यहाँ पर जो सिंगल मेमोरी होती है, वेरास कहते हैं जो मल्टी मेमोरी सेल्स होते हैं हमारे LSTM होते हैं, दैट इज व्हाई LSTM जो होता है वो इसकी लिमिटेशंस को कोप अप कहते हैं कोप अप करके एक अच्छा मॉडल बन जाता है एज कम्पेयर टू एन RNN, ठीक है। एंड एक ये डिफरेंस बोल सकते हो। दूसरा डिफरेंस आप जो इंटरव्यू कभी भी पूछेगा वो ये है कि भाई इसके अंदर जो हिडन लेयर्स होती हैं, लाइक यू माइट हैव गाइस हैव नोन कि हिडन लेयर जब भी होती है तो मिनिमम हिडन लेयर्स होती है वो RNN के अंदर दैट इज नंबर ऑफ 1, ठीक है। तो इसके सिर्फ एक हिडन लेयर होती है बिकॉज यहाँ पर हमारा फॉर लूप चलता रहता है, सॉरी फॉर लूप जो होता है वो चलता रहता है and keeps on going and unfolding the hidden layers as and when required because depending on the number of time steps allowed or given to us as a variable declared, ठीक है। तो वैसे चलता रहता है, बट वेरास कहते हैं हमारे जो वो होता है LSTM आप हिडन लेयर्स होती हैं हम अपने हिसाब से डिक्लेयर कर सकते हैं, इसमें कोई गेट्स नहीं होते RNN के अंदर, वेरास LSTM कंसिस्ट ऑफ 3 गेट्स एंड उसके बेसिस पे यूज करते हैं। अब आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि भाई लिमिटेड एंड स्ट्रॉन्ग के बीच में क्या था डिफरेंस, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल बिकॉज़ द होल टेबल वाज क्वाइट ह्यूज एंड पुटिंग इट ऑल टुगेदर ओवर हियर वाज डिफिकल्ट, सो इसलिए मैंने याद नहीं आ रहा क्या था। But yeah, these many differences will be enough for you guys to know the basic difference. What is the basic difference between RNN and LSTM? Okay, guys. So before running the Kaggle notebook, I gave you some time in order for you guys to understand the architecture or cope up till past 5 to 6 slides that we have discussed. If you have any doubt in those 5 to 6 slides, kindly ask the questions in the chat box. I'll answer those questions and do let me know about them. All right. So I'll give you guys 5 minutes to read all of the slides once again, go to the content provided in it, and ask the questions depending upon those RNN, depending on the topics of RNN and LSTM. GRU is basically an advanced topic होता है, उसको हम कहते हैं नेम दिया जाता है light LSTM,
ठीक है, तो वी विल बी डिस्कसिंग, वो जो होता है वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है तो हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं, बट बेसिक जो मेन मॉडल्स जो होते हैं वो आ रहे हैं एलएसटी यहाँ पर। ठीक है, सो गाइस जस्ट गो थ्रू द all of the slides that are provided to you, and we'll start the Kaggle notebook part in the next 5 minutes. Any doubts, you can unmute yourself or even drop me and turn off the doubts in the chat box, and we'll answer you those chats accordingly. All right. So read the content of the slides that we did right now.
All right, guys. So I have not received any doubts till now. I hope that all of things are clear to you. I guess I'm teaching that well in that case. Okay, so I asked Tanav that if there's any doubts. No, he hasn't even not received anyone. So all right, so we'll move on to next thing. That is, guys, I request you all to open up the Kaggle notebook, go to my profile and open this notebook of basic RNN and LSTM. Alright, so हम इस notebook में देखेंगे भी कैसे हम लोगों ने basic simple RNN का function जो होता है वो कैसे implement किया, word embeddings होती हैं वो कैसे करी, then LSTM किया, LSTM का model fit किया, then GRU देखा, and accuracies देखेंगे हम लोग. Alright, so आपको मैं से देखो मैंने ये basically सारा कुछ introduce तो किया हुआ इस topic and all. This is basically for the next transformers and all that. ये मैंने TPUs को setup करने के लिए मैंने TPU master clear कर दिया. I know that you guys might be getting error warnings and all. तो आप कहते हैं वहाँ पर import warning करके ignore कर सकते हो. तो they will not show it even on your over here. Alright, so moving on next is कि भाई यहाँ पर मैंने क्या किया वहाँ पर call कर लिए functions like this. जो नीचे ये addresses कहते हैं वो drop कर दिया. And then I move on to the making of the like basic of RNN बनाने के लिए code implementation. यहाँ पर मैंने क्या किया एक यहाँ पर जो था मैंने layers declare कर दी, एक dense layer डाल दी, RNN डाल दी, embedding layer डाली हुई, 3 layers का basic RNN बना दिया, solve कर दिया. तो ये हमारा बन गया. And इसको जब fit करते से बताया था इसकी 83% accuracy आ गई थी, right? So this is what an accuracy was of RNN. It was very too less. तो ऐसे चल रहा था, ठीक है? And उसके बाद like we move on to the word embedding. So मुझे ऐसे बताया था कि भाई ग्लव के अंदर they were like 1,21,90,000 word vectors found हुए थे. तो ये जैसे ग्लव का मैं वेक्टर जो था लोड किया ना डिक्शनरी, ठीक है? मैं आपको ऐसा ग्लव डाटा ऐसा डाटा सेट भी मैं यूज कर रहा हूँ फॉर 2 GB. उसको मैं ग्लव को इंपोर्ट किया यहाँ पर स्प्लिट करके फिर कॉल किया बेसिकली. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पर 21,96,018 iterations है मेरे यहाँ पे. ठीक है, इतने वर्ड वेक्टर्स मेरे को यहाँ पर मिले हैं. So this is what how and you can use glove and all other word to peg हो गया to find the libraries and all that. Alright, so moving on next is कि भाई basic कहते हैं LSTM का मॉडल कैसे डिक्लेयर करते हैं. यहाँ पर आप लिखोगे सिंगल हिडन लेयर ही थी इसलिए हम लोगों ने कुछ कहा नहीं. अब LSTM का मॉडल आया. LSTM के मॉडल में पहले हम लोगों ने एम्बेडिंग मैट्रिक्स एम्बेडिंग लेयर डाली, देन LSTM की एक लेयर होती है वो डाली, देन डेंस लेयर डाली. ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर मैंने बेसिक 3 लेयर्स डाल दी हुई है, सबको दिखाया था बताया था. ड्रॉप आउट टेस्ट डाल दिया 0.3 0.2 डाल सकते हो, डालना चाहते हो. ऑप्टिमाइजर एडम होता है, आपको पता है क्यों ये हमेशा बेस्ट ऑप्टिमाइजर होता है इसलिए हम यूज करते हैं, मोस्टली एडम यूज करते हैं. ठीक है, ऐसे कॉल करके इसको ये मॉडल बना दिया. दिस इज व्हाट द मॉडल कंसिस्ट ऑफ. ठीक है, एंड देन व्हाट आई डिड वाज कि इसको मॉडल को मैंने फिट कर दिया. ठीक है, इसकी 5 epochs डाल दी एंड यू विल सी द चेंज इन एक्यूरेसी एट द मोमेंट. वो एक्यूरेसी आप देखोगे वो 96% बन गई थी. एंड दिस 96% एक्यूरेसी इज वे टू मच एज कंपेयर टू व्हाट आई हैव गॉट इन RNN. ठीक है, RNN की एक्यूरेसी जो थी वो कितनी 83% की थी एंड इसकी 96% की आ गई. तो यू कैन सी द डिफरेंस इन द एक्यूरेसी दैट वी फेस ओवर हियर. Guys, if you have any doubts, you can drop me messages and me and Tanav in the chat box. We'll clear them out for you guys. This is not an issue for all. ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर जाएंगे उसके बाद हम लोगों ने क्या किया. GRU कोड इज टास्क फॉर यू. मैं यहाँ पर ना लिंक्स ड्रॉप कर दिए लाइक फॉर GRU कि आप कहाँ से पढ़ सकते हो, क्या कर सकते हो. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डिस्कस इट कहते हैं विद मी एंड आई विल शेयर विद लाइक वी क्लियर योर डाउट्स टुमारो इटसेल्फ. ठीक है, तो ऐसे ये बेसिकली GRU का होता है, वो ये किया था लोगों ने. ठीक है, GRU को भी बेसिकली मैंने एक्टिवेशन कहते हैं सिग्मा यूज किया था एंड कहते हैं. और फिर उसके बाद मैंने कहते हैं यहाँ पर जो होता है ना कि ऑप्टिमाइजर दोबारा मैंने एडम यूज किया एंड देन कहते हैं ऑलराइट. तो एक्टिवेशन यहाँ पर मैंने स्पेशल कहते ड्रॉप आउट लेयर डाल दी, एम्बेडिंग लेयर्स डाल दी, डेंस लेयर्स डाल दी, ऐसे करके मैंने इसको बनाया. तो यहाँ पर मुझे अब देखोगे एक्यूरेसी जो होती है इट इज इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू LSTM इवन. सो वी कैन से कि भाई यहाँ पर GRU की जो एक्यूरेसी है इज मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ कहते हैं व्हाट वी कॉल LSTM and that of RNN even, like you can see over here. ऑलराइट गाइस, आप जब इसको नोटबुक को रन करने की कोशिश करोगे ना तो आप प्लीज एक बार ट्राई करना कि आप ना पहले TPUs ऑन कर लेना. लाइक TPU जो आपका है वो ऑन करके देन ओनली रन दिस नोटबुक, अदरवाइज इट वोंट रन बिकॉज़ आपको यहाँ पर फिर एरर दे देगा एंड इट विल गेट स्टॉप्ड ओवर हियर. सो अपने कहते नोटबुक एक बार बेसिकली कर देना.
like TP on करके फिर रन करोगे and please ignore all of the warnings which are coming over here. ठीक है, these have to be ignored. बाकी अगर कोई इंटरप्ट कर रही है, कोई डिस्टर्ब कर रही है, तो वो या लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट वार्निंग्स करके, एंड देन यू से इग्नोर वार्निंग्स एंड देन डू इट अकॉर्डिंग टू दैट सेल्फ. ठीक है, सो आई गिव यू सम टाइम to run this whole code, and if you have any doubts, do ask them. Alright, guys. So just take some time, run this code, edit and copy, and then switch on the session. And पहले वहाँ पर TPU करके फिर आप अपने doubts पूछ लेना. Anyone has any doubts? Please ask. Guys, if you have any doubts, do please ask over here. We will be answering all of the doubt questions on the call or anything of that sort. गाइस, जो आपका जो गेट्स होते हैं ना एलएसटीएम के अंदर, या बेसिकली क्या होता है, दे आर कहते हैं कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स विच कंसिस्ट इन द न्यूरॉन इटसेल्फ. ठीक है, तो अब इसके अंदर आप ब्रेन डिटेल जाना तो आपको कहते हैं बेसिकली इसकी मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द डेप्थ एंड ऑल. तो ठीक है, यहाँ बेसिकली होता क्या है, गेट्स जो होते हैं ना, दे आर the components of neural network. Nothing else. Not the neural network itself. The components in use cases. Any other doubts, guys? Please ask.
Guys, if you have any doubts, do please ask. And I guess we'll stop the screen running now. All right. So if you have any doubts, you can ask that even.